Welcome to the NCERT classroom. Have you ever wondered how scientists from different countries understand each other? How can a scientist in India and a scientist in Japan use exactly the same measurements? और साइंस की अपनी लैंग्वेज क्यों होती है? The answer is actually more interesting than you think. Let's explore. Welcome back. आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि साइंस दुनिया भर में आइडियाज को कम्युनिकेट कैसे करती है. Imagine I ask 3 students to measure the same study table. One student says it's 8 book long, another says it's 12 pencils long, and the third says it's 5 hands long. अब ऑनेस्टली बताओ, क्या हम इन तीनों मेजरमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं? नॉट रियली. और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम साइंटिस्ट को भी फेस करनी पड़ती अगर हर पर्सन अलग अलग यूनिट्स को यूज करता. साइंस इज अ ग्लोबल सब्जेक्ट. साइंटिस्ट इंडिया में भी काम करते हैं, जापान में भी, अमेरिका में भी और दुनिया की कई और कंट्रीज में भी. So they need a common language that everyone can understand. अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं. डेली लाइफ में हम वर्क वर्ड यूज करते हैं जब हम होमवर्क करते हैं या कोई टास्क कंप्लीट करते हैं, बट साइंस में वर्क का मीनिंग डिफरेंट होता है. सेम थिंग हैपेंस विद वर्ड लाइक फोर्स, सेल एंड रिएक्शन. डेली लाइफ और साइंस में इन वर्ड्स का मीनिंग सेम नहीं होता. दैट्स व्हाई साइंटिफिक लैंग्वेज हैज टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज ताकि कंफ्यूजन ना हो. इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग नेम्स अगेन एंड अगेन, scientists use symbols. For example, mass is represented by M, velocity by V, force by F, इलेक्ट्रिक करंट बाय I. ये सिंबल्स सिंपल भी हैं एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी. सो एवरी साइंटिस्ट अंडरस्टैंड्स एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड. अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. व्हाई डज साइंस यूज मैथमेटिक्स सो मच? मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इक्वेशन सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए ही होती है, but that's not completely true. Mathematics is actually a language that helps us describe relationships clearly. For example, distance, time, and velocity can help us predict where an object will be later. So equations are not enemies, they are actually tools that help us think better. Now let's talk about units. Imagine you go to buy 1 kilogram of vegetables. आप एक्सपेक्ट करते हो कि 1 किलोग्राम दिल्ली में भी सेम हो और मुंबई में भी, राइट? इमेजिन अगर हर सिटी का किलोग्राम अलग होता, टोटल chaos हो जाता. That's why measurements are based on international standards. In fact, history में एक रियल इंसिडेंट भी हुआ था. An aircraft received less fuel than required because kilograms and pounds got mixed up. Due to this measurement error, the aircraft faced a serious problem during flights. This shows why standard units are so important in science and in real life. So today we learned that science has its own language. It uses precise words, standard symbols, mathematics, and internationally accepted units. All of these help scientists understand and communicate ideas clearly. In the next video, we will explore something very exciting. What is the difference between a law and a theory and a principle? Trust me, most students think they are the same, but they are not. Stay curious, keep exploring.